And next topic and the most important chapter is data collection. There are several sources of data collection, but here it is divided into two main data sources, that is primary and secondary. So whenever we need any research, we need data, source of information. And source of information is called data. And data is collected by two different means, primary and secondary. In this chapter, we will focus on both secondary and primary data, including commercial data. Obtaining secondary information, types of secondary information, sources of external secondary data, and syndicated services that provide secondary data. Secondary data allows both management and researchers to make critical decisions about research problems. First of all, we will discuss what is secondary data. Secondary data is the data that has already been collected through primary sources and made readily available for researchers to use for their own research. Secondary data is collected from research. The information is often found in outside sources. However, don't overlook your own company's record or your competitors' open records. Such information can help build a strong foundation for your research project. मीन्स सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि ऑलरेडी किसी रिसर्च के सिलसिले में इकट्ठा किया जा चुका होता है, वो भी एक प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा किया जाता है और वो आपकी लाइब्रेरी में हो सकता है, पुराने रिसर्च प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और या आपकी अपनी कंपनी में या बाहर से भी लिया जा सकता है। बाहर की जो दूसरी कंपनीज के आपके कंपेटिटर्स के ओपन रिकॉर्ड्स हैं जो वेब पे अवेलेबल हैं, जो रेडली अवेलेबल हैं, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अगरचे वो स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम के लिए नहीं कलेक्ट किया होता, बट दैट इज़ अवेलेबल एंड दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर रिसर्च। और प्राइमरी डेटा का व्हाट इज प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड by the researcher. Respondents are asked questions while the researcher collects the responses. These can be verbal or written. Responses can also be observed via respondents' behavior. Collecting primary data is vital in finding solutions to research problem. अब प्राइमरी डेटा क्या है? डायरेक्ट रिसर्चर जो है, फर्ज करें आप मार्केटिंग मैनेजर हैं और आप चेक करना चाह रहे हैं कि शहदाद कोट में या सक्खर में या कराची में या लाहौर में किसी भी आपके एक रीजन में सेल्स ड्रॉप हुई है। आप कस्टमर्स के पास, पोटेंशियल कस्टमर्स के पास, अपने पुराने कस्टमर्स के पास जाके क्वेश्चन लेके जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आप हमारी चीज़ क्यों नहीं खरीद रहे, पहले आप खरीदते थे अब क्यों नहीं खरीद रहे, लाइक दिस। तो क्वेश्चंस के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं उनका बिहेवियर, उनको एटीट्यूड देखने के बाद भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको भी आप रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। तो सो प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स और रिसर्चर उससे क्वेश्चन पूछते हैं मुख्तलिफ तरीके से। अब इन्हीं की एक किस्म है कमर्शियल डेटा, वो भी सेकेंडरी डेटा ही होता है, लेकिन एक तो ये फ्रीली आपके पास अवेलेबल है, आपके पास कंपेटिटर्स का या किसी भी कंपनी का ओपन रिकॉर्ड जो है दैट्स फ्रीली अवेलेबल। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज है जो सेल करती हैं अपना डेटा, दे कलेक्ट डेटा थ्रू प्राइमरी सोर्सेज और उसको एक लाइब्रेरी में महफूज रखते हैं, और जिस रिसर्चर को भी जरूरत पड़ती है तो वो डेटा कलेक्ट जो होता है वो सेकेंडरी डेटा के तौर पे सेल करते हैं, इसलिए हम इसको कमर्शियल डेटा कहते हैं। Commercial data is a secondary data sold by syndicated services. Marketing research firms or industry associations collect this information. It's similar to the primary, both primary and secondary data, because commercial data is initially collected as primary data to address a research problem. However, it is not specific to the purchaser's current research problem. Commercial data tends to be general enough to apply to a variety of projects, but it can be quite useful. Researchers can purchase this information and incorporate into their study as secondary source of material. अब ये प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा किया होता है और अब जब कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए तो ये इकट्ठा नहीं किया गया ये डेटा, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन आपकी करंट प्रॉब्लम के लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस। सो सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा दो मेन सोर्सेज हैं और कमर्शियल डेटा भी सेकेंडरी सोर्स
सॉफ्ट डेटा ही कहलाता है, लेकिन ये परचेज करना पड़ता है। अब ये कि हम इकट्ठा क्यों करते हैं डेटा, वाई वी नीड टू कलेक्ट डेटा टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, रीजंस फॉर ऑब्टेनिंग सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। Before you start a research project, before you look at primary data, it is important to investigate secondary source first. The reason will be discussed, which is may your secondary data already available may solve your problem. ठीक है, अगर आपको हो सकता है प्राइमरी डेटा की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि प्राइमरी डेटा महंगा है, आप क्वेश्चन घूमेंगे फिरेंगे, आप उसके फील्ड में जाएंगे, लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे या सर्वे, और टाइम टेकिंग है, सर्च कॉस्टलेस, डेफिनेटली इस पे कॉस्ट कम आती है। इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री यूज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पिटफॉल्स। अब सेकेंडरी डेटा इंफॉर्मेशन में सॉल्व द प्रॉब्लम। नंबर वन क्या है, reason for obtaining secondary information before you start research project, before you look at primary data, it is important to investigate secondary sources first. The reason is, number one, secondary information may solve the problem. If enough information is available, you may solve the problem and avoid doing primary search. हो सकता है आपको ये प्राइमरी सर्च की जरूरत ही ना पड़े, अगर आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, जो पहले से रिसर्च की गई है, या उसको प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा इकट्ठा किया गया है, तो हो सकता है यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। नंबर टू, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सर्च कॉस्टलेस। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो है उसमें कॉस्ट नहीं आती, आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरी में चीज़ें अवेलेबल है, पुराने प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए पड़े हुए हैं, तो इसलिए इस पर कोई कॉस्ट नहीं आएगी। कंपेयर टू ओरिजिनल रिसर्च, an in-depth search of secondary sources takes a fraction of the time and budget. Numerous research publications and database can be accessed online for free. The reward of secondary information search for outweigh the cost. Such information allows you to avoid redundancy in your primary search. Furthermore, you can use the primary research budget elsewhere. In fact, many research programs won't approve expenditure on primary research if a secondary information source can be utilized. अगर आपके पास पहले से सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो बहुत सारी कंपनीज प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए बजट ही एलोकेट नहीं करती, वो बजट कहीं और आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, secondary information has important supplementary use. ये क्या है, sometimes secondary information isn't enough to solve your research problem, but it can still be useful. Supplementary use for secondary information include, number one, defining the problem. अब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से या सेकेंडरी डेटा से, लेकिन स्टिल दिस सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कैन बी यूज एज ए सप्लीमेंट्री to solve your problem or define your problem. First of all, number one, defining the problem and formulating hypotheses about its use. As you are refining your research question and developing a hypothesis, you want as much information as possible. First of all, इसको सप्लीमेंट्री कैसे यूज करेंगे कि आपको प्राइमरी डेटा की तो लाजमी जरूरत है, लेकिन आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए, रिसर्च क्वेश्चंस तैयार करने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी कि किस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से रिसर्च क्वेश्चंस को हमने बनाना है जो कि रिस्पोंडेंट से पूछे जाएंगे। नंबर टू, प्लानिंग द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अब किस तरह से हमने डेटा कलेक्ट करना है, ये भी आपको, ये जो सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है, इससे आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाएगी। Analyzing data collecting techniques in secondary research can provide input on what will work for your research project. Secondary data को देखते हुए कि कौन सी टेक्निक, कौन सा डिजाइन, कौन सा तरीका का आपको प्राइमरी डेटा कलेक्शन में काम आएगा। तो so these available secondary information can be used as a supplementary for your current problem. Number three, defining the population and selecting the sample. Past information on the population sample and appropriate sampling technique can help establish a framework for your primary research. अब इसी को सप्लीमेंट्री यूज करते हुए
आपको पॉपुलेशन या सैंपल को सिलेक्ट करना आसान होगा कि कौन सी एरिया को हमने टारगेट करना है, हमारे टारगेट कस्टमर्स किस इलाके में मौजूद है, वेदर वी हैव टू रिसर्च इन शहदादकोट, लाड़काना, कंबर, सक्खर, जैकोबाद और कराची, और whole Sindh or whole Pakistan or whole region. So already available information will guide you, will give you a sort of guideline how to prepare your questionnaires, how to establish your research design and each everything. अगर आपको प्राइमरी डेटा की जरूरत है तो भी ये एज ए सप्लीमेंट्री यूज हो जाएगा. Secondary information pitfalls. Even though secondary information is vital, you must be cautious. Secondary data must be readily available, relevant to your needs, accurate and pertinent to the problem. When you research secondary sources, you must evaluate why the data was originally collected. It is it reliable, and if the right techniques were used? In short, you can't always expect to find consistency among the data you consider. Data may not use the same categories or demographics. You have to know what techniques were used and what the original purpose for the data was as your research secondary sources. पिटफॉल्स, आपने ये चेक करना है कि ये सेकेंडरी डेटा जो अवेलेबल है किस प्रॉब्लम के लिए इकट्ठा किया गया था और क्या ये आपके उन डेमोग्राफिक को हिट कर रहे हैं. डेमोग्राफिक मीन्स कौन से इलाका, कौन से एज ग्रुप के लोग, कौन से जेंडर के लोगों को आपने टारगेट करना है. मुमकिन है वो 100% आपकी प्रॉब्लम पे पूरा ना उतर रहा हो वो सारे का सारा डेटा, लेकिन बट स्टिल यू विल गेट अ गाइडलाइन फ्रॉम हियर. राइट, होप यू अंडरस्टूड. Next comes types of secondary information. There are two major types. Number one, secondary information generally falls into two categories: internal secondary data and external secondary data. For example, you are representing an organization या आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपका जो इंटरनल डेटा है वो डेफिनेटली आपकी अपनी कंपनी से मिलेगा. Companies collect information as they conduct business every day. They receive orders, fill orders, record cost, receive warranty cards, submit sales reports, and make engineering reports. These sources are called internal secondary data. Even though this information is collected for other purposes, you can easily access it for a research project. The key to internal data is knowing where to find it. In order to use internal data effectively, the company must have an effective information system. So what is internal data? Internal data is your day-to-day operations, information and reports and whatever reports were prepared during past 1 month, 1 year, उन्हीं इंफॉर्मेशन को आप दोबारा आप यूज कर सकते हैं फॉर योर रिसर्च प्रॉब्लम. वो रिपोर्ट्स तैयार तो किसी और मकसद के लिए की गई थी, वो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड थी कि आज हमारी कितनी सेल हुई है, लास्ट डे कितनी सेल हुई थी, नेक्स्ट डे का बजट क्या है, या प्रीवियस मंथ में कितनी सेल है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंट प्रीवियस साल के सेम मंथ में कितनी सेल थी, प्रीवियस ईयर की कितनी सेल है और इस साल हम कितना टारगेट है, कितना हम अचीव कर चुके. ये डेली रिपोर्ट्स तैयार हो रही होती हैं और इन्हीं इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप अपना यही डेटा अपनी करंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड व्हाट इज एक्सटर्नल डेटा? एक्सटर्नल डेटा that your problem data that you obtain from outside sources is called external data. External data is available in staggering amount as assortments. It is often available for major types of marketing research, focusing on non-controllable aspects of the problem: total market size, market characteristics, competitors' products, prices, promotional efforts, and distribution needs. So, आपका जो
एक्सटर्नल डेटा है वो आप कहाँ से हासिल करते हैं, मुख्तलिफ उसकी सोर्सेज हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो कंपेटिटर्स आपके, दूसरी कंपनीज हैं, और उनसे जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं इसको भी आप अपनी करंट प्रॉब्लम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वी आर What are the sources of? Number one, we have discussed the different kind of secondary data sources. All you have already access to some through internal data, but where do you find external secondary data? The major sources of external secondary data include: number one, government; number two, trade associations; number three, periodical and professional journals; number four, institutions, universities and research organizations; number four, commercial services. और भी होती होंगी, लेकिन ये हम यहाँ पे आपका सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए कि हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, हम ये 5 टाइप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, गवर्नमेंट। Basic market data is usually available from census conducted by federal government. Census from the government will normally provide such demographic information as the number of consumers or consuming units by age group, income class, gender, and geographic area. You can use this information for market performance studies. A good first source in Pakistan, Bureau of Statistics, Government of Pakistan, available online at, ये मैंने नीचे आपको आप कर सकते हैं, ये एक लिंक दिया गया है, इस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि हमारे पास कितने मेल है, कितने फीमेल है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कौन सी परचेजिंग पावर किस एरिया में कितनी है, किस एरिया में कितनी है, तो यहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। द रेफरेंस सिंप्लीफाइज डेटा फ्रॉम ओरिजिनल रिपोर्ट and provides useful material on social, political, and economic matters. The source is good reference to more detailed data. For example, Pakistan estimated population, ये आपको estimated population excluding Azad Kashmir and Gilgit Baltistan in 2017 was 207 million. According to the 2017 census, Pakistan, Government of Pakistan, it is the world's 5th most populous country. However, as per recent 2020 statistics, the current population of Pakistan is 222 million with a growth of 2%. तो सो इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से मिली हमें? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मिली। These data are collected from primary and secondary sources. ये दोनों sources से इकट्ठा किया गया है to show the primary data are collected through different surveys such as labor force survey, household integrated economic survey, Pakistan integrated household survey, पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे। इस तरह के सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इनमें से हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देंगी। नंबर टू, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर another useful source of demographic information. You might think that Pakistan is a data poor country, but that is certainly not the case. There are surprisingly high number of government agencies and private organizations working to release free data sets of anyone to use. There is a long list of such private public organizations and private organizations, and you can visit up इस ये जो मैंने लिंक दिया है यहाँ पे ये नज़र आ रहा है प्राइवेट के नीचे इस पिक्चर के ऊपर, इस पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? पाकिस्तान नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज आपको मिलेंगी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये आपको डेटा मिलेगा, उसके अलावा पाकिस्तान इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अलावा आपको पाकिस्तान मंथली एंड एनुअल ऑटो डोमेस्टिक सेल्स मिलेगी, प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड
पाकिस्तान इकोनॉमिक डेटा मिलेगा, पाकिस्तान डिस्क्रिशनरी फंड्स मिलेंगे आपको, पाकिस्तान डेटा पोर्टल, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की सारी चीज़ें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पंजाब हेल्थ वॉच, ओपन डेटा इनिशिएटिव, पाकिस्तान मिलीनियम डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक डेटा, ये सारी चीज़ें आपको, एजुकेशन डेटा, पाकिस्तान एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको इन वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है। और इन इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सम रेलिवेंसी आपको मिल जाएगी। बलूचिस्तान के ऊपर आपको चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है जो कि ecp.gov.pk, इस सारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको रेडीली अवेलेबल सेकेंडरी डेटा मिलेगा। तो दीज आर sources of secondary data. Next comes computerized database. The internet has become a research staple. You are able to access most commercial electronic database online. There are thousands of databases available. These can be divided into 5 categories of commercial database. Number 1, bibliographic database that index publications. Number 2, financial database with detailed information about companies. Number 3, statistical database for demographic, economic, and other numeric data for forecasting and doing projections. Number 4, directories and encyclopedias offering factual information about people, companies, and organizations. Number 5, full text database from which an entire document can be printed out. So ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं कंप्यूटराइज डेटाबेस के ऊपर। So this was all about how to collect secondary data, what are the sources of secondary data. Our next topic will be primary data and the techniques to collect primary